देखिए अभी तक हमने काफ़ी सारे सोर्सेज का पढ़ा, ठीक है, जिसमें जैसे कि हमने प्राइवेट सोर्सेज की भी हमने बात करी। लाइक वी टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग, कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैसे एक रोल प्ले करते हैं, पर्टिकुलरली इन प्रोवाइडिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, राइट. So now we talk about sources of finance for sustainable growth. So while all the sources of agricultural finance contribute to the growth of the sector, बहुत सारे sources हैं agricultural finance के जो contribute करते हैं agricultural growth sector के लिए, बस कुछ sources ऐसे होते हैं जो particularly important होते हैं for promoting sustainable development in India. So sustainable agriculture aims to enhance productivity, improve रिसोर्सेज एफिशिएंसी. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो एम करता है इन्हांस करने पे प्रोडक्टिविटी को, इम्प्रूव करता है रिसोर्स की एफिशिएंसी को, और प्रमोट करता है एनवायरमेंटल स्टीवर्डशिप को. सो वाइल एंश्योरिंग द इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड सोशल इक्विटी ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज़, while ensuring the economic viability and social equity of farming communities. So to achieve these objectives, the following sources of finance are crucial, very much. तो कौन से sources हैं जो sustainable development के लिए crucial हैं? तो सबसे पहले देखिए foreign direct investment को. तो जो foreign की direct investment sources of finance, foreign direct investment sources of finance will be important for sustainable agricultural growth in country. Agriculture plays a vital role in India's economy. Over 58% of rural households depend on agriculture as their principal means of livelihood. Agriculture, along with fisheries and forestry, is one of the largest contributor to GDP. So close to the India का जो agricultural business fund है वो इतना है. तो इस तरह से हमें पता चलता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है. इसके अलावा देखिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज़ हैं ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पाइवटल रोल इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट, इंसेंटिव्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द फार्मर्स. नाउ दीज स्कीम्स एनहांस प्रोडक्टिविटी, कंजर्व नेचुरल सोर्सेज एंड प्रमोट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना to expand the area under irrigation and improve water use efficiency. So Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, with the help of adoption of micro irrigation techniques, rainwater harvesting and watershed management. Similarly we have soil health card scheme which provide the farmers with personalized recommendations for soil health improvement based on soil testing results, and thereby promoting balanced fertilization, organic farming and soil conservation. ठीक है, तो ये इम्प्रूवमेंट देता है बेस्ड ऑन सॉइल टेस्टिंग रिजल्ट बाय प्रमोटिंग बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सॉइल कंजर्वेशन. So by incentivizing sustainable practices and mitigation risks associated with climate change, government schemes and subsidies contribute to the long-term resilience and sustainability of agricultural sector. इसके अलावा देखिए कोऑपरेटिव बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, तो ये भी एक क्रूशल रोल लेते हैं इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज to smallholder farmers, marginalized communities and rural entrepreneurs. Unlike the commercial banks and non-banking financial companies which may prioritize the profit making, इसमें profit making का कोई रोल नहीं है, and collateral based lending, जो cooperative banks हैं और micro financial institutions हैं, they often have a social mission and deeper understanding of local agricultural practices, social economic dynamics. So they offer tailored financial products and services that meet the specific needs of farmers engaged in sustainable agriculture, such as organic farming, agroforestry and conservation of agriculture. Moreover, cooperative banks and microfinancial institutions collaborate with grassroots organizations, self-help groups, farmer-producer organizations to promote sustainable agriculture through capacity building, extension services and market linkages. इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग बैंक्स भी जो हैं
वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं बिजनेस केस फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड इंटीग्रेटिंग द एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, and they are considering into their lending and investment decision and offer innovative financial products and services that incentivize sustainable farming practices, improve risk management, and enhance value chain efficiencies. So private banks collaborate with agribusiness cooperatives and NGOs to develop sustainable agriculture finance program that promote resource conservation, climate resilience, and inclusive growth. So they leverage digital technologies, data analytics, satellite imagery to assess the credit risk, monitor agricultural performance, and track environmental impact metrics. So basically, private sector financing complements public sector initiatives and community-based approaches to sustainable agriculture, contributing to scaling up and mainstreaming of sustainable practices across agricultural value chain. And by aligning financial incentives with environmental and social objectives, private sector financing can unlock new sources of investment capital and drive transformative change in agricultural sector. So, in conclusion, sustainable agriculture finance is essential for promoting environmentally sound, socially equitable, and economically viable agricultural practices in India. Government schemes, subsidies, cooperative banks, micro-financial institutions, non-banking financial companies, private sector play a pivot role in providing financial resources, incentives, and technical assistance to farmers and agribusiness. And by promoting sustainable agriculture, these sources of finance contribute to food security, poverty alleviation, climate resilience, and inclusive growth, thereby advancing the goals of development in India and beyond.